Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Sudhir. Good morning, Maithili. Good morning, Varun. जो भी doubts है पूछ लो. We'll start the streaming in 2 minutes. Good morning, everyone. Good morning, Arya. Good morning, Ritesh. Good morning, Prashant. We'll start. We'll start. We are waiting for one more person to join. Good morning, Zaidji. Good morning, Suresh sir. Yes, let's start with the analysis.
1 hour time frame. What are the two major things that you have to notice, right? कल के दिन में first trade of execution was towards the long because of the volume structure which has been allowed trade. उसके साथ ही long देखे थे. Continuity में iceberg zone. So henceforth जब तक वो high volume development में नहीं आई थी तब तक trade of action plan long के था. Once the high volume was built, where was the first high volume built? कल के दिन कोई meetings नहीं थी, so this was the first high volume built in the formation. With that high volume, market redeveloped the structure towards the short, following continuity in the moment. इस continuity in the moment के साथ आज के दिन में अगर notice कर रहे हो, तो the high volume stability was built in the current candle in the Asian session of this, right? So what is it indicating? The indication of the moment currently is towards the short, not towards the long. Because sufficingly, the moment of action plan which will be looked and allotted in pursuance is just only one thing, that is the generational moment, right? So generational moment के हिसाब से LG point of action in 1 hour is also been built over here. And in the current scenario, we do have a LG. So in this zone, what we will be doing with the setups, execute the trade. Henceforth, we don't have a setup at the current scenario. So we wait for the plan of actions in Asian session, right? So in the current scenario, we know that which side is the direction which will be following through. With the following allocation, what are the next steps that we'll be looking for is in 15 minutes. What is 15 minutes indicating? कल के दिन में जो S2B1 ड्रॉप होने के बाद हाई वॉल्यूम के साथ what are the major follow throughs that we'll be looking for at the current stage? एक ही ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन को repeatedly unwantedly executes karna will hurt your capital. Henceforth, don't execute any kind of trades in this kind of zones because you don't have setups, right? So we are not here to execute a trade of action plan for 30-40 pips. Look for a better opportunity trades which gives with a good flow in of diluted liquidity. So at this current stage, where are the major liquidity points of action plan? The diluted liquidity one at this stage. Let the market hunt at this range of action. With the hunt, then create a setup and follow through. But as per the Asian session, the allocations has been stabilized towards the short. Henceforth, there is no setup over here. Let the market give the setup formation at this current range. If there is a setup, we'll be looking for a trade-off execution towards the short. Without that, no execution plans will be taken under the considerations in gold for today's scenario, right? It might trap all the players which are looking for running executions. So precisely wait for the diluted liquidity to create. With that, just make sure you get into a right circumstantial play where the market has created a formation. With that formation only, trade-off execution will be taken under the play, not prior to that. Okay, so जो भी doubts gold में है, please do let me know. Follow the chapter volume, Sudhir. Okay, so this is the first plan of action of gold. As of now, patientfully बैठ के देखो. Don't get into running candles for small 30 pips, 40 pips trade. Plan of execution should be anywhere between ID में 150 pips, 100 to 150 pips लेके चलो beginners, right? Conversion में it should be more than 250 pips. So wait for the right moment, right setup, then execute the trades. Okay. फॉलोइंग विद BTC कल का रेट जो चल रहा है शॉर्ट के लिए सेम प्लान ऑफ एक्शन के साथ
आज के दिन का मेजर अलोकेशंस क्या होंगे? 1 hour formations will be taken under the consideration of the drop line. Exact 100% से rejection लेके sustain हुई है market, correct? So in this formation, what are the next few major roles that will be playing at the current stage? One, allocation. Two, break and continue. 150% rejection. अगर week से ले रहे हो, then it is 150. Right? With the rejection, what do we notice? Do we have a threshold at this point of action? No. Right? But do we have a threshold at this point of action? No. So there will be a small hunt of action which you will be looking for, and let the market create a proper setup for a reversal executional plan. With that only trade-off execution will be looked at, not prior to that. Okay. Henceforth, in BTC, you will be waiting for a setup to form with the setup formation execution. Currently, market is in the range where the market had opened and with a negative 170 points, which is not even the range of execution. Okay. Capturing should be looked in perspective of 1500 plus points in ID, conversion more than 3000 points. So that is the following executional plan that what you will be looking for, right? So with this scenario, what are the next steps that we'll be looking? 150% rejection. With 150% rejection, demand allocation के साथ first come first serve demand will be played. One, break and continue. Two, right? Excuse me. Good morning, Tosif. So this could be the Subataj plan of action which we'll be looking for in today's scenario. Any doubts, please do ask. Good morning, Prakash. कन्वर्जन को अलॉट कर लेना सभी लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर क्लोज होने के बाद. कल आईडी ट्रेड्स था. वी एग्जीक्यूटेड 7 ट्रेड्स. एक ही ट्रेड नेगेटिव में क्लोज हुई कल. रेस्ट ऑल वाज इन ग्रीन. दिखा रहा. सर 3 wing second setup considered in BTC. That's right, sir. As per the analysis shared in the group.
right? First trade of execution plan was towards the long, target hit, right? S2B1 के साथ short, target hit. उसके बाद यहाँ पे दो trade of executions were taken into the play. One was intact execution as per the explanation in the live. First execution. Second execution was S2B1 over here, right? And then the third add-on was at the point of 200% demand, and fourth add-on was at the POI, right? POI break continued with the setup. उसमें से एक ही trade जो negative में close किए, that was the second add-on. मतलब first add-on post the original execution over here. So rest all were, this one closed in green, this one closed in green, this one closed in green with 70 pips. This one we gave a closure of negative 30 pips. Reason of giving this trade negative 30 pips is very simple, because the execution was formed in pursuance of 1 hour high volume. 1 hour high volume के साथ S2B1 formation यहाँ पे develop हुई थी. Henceforth, this trade was closed in negative 30 pips. Rest all were followed with strong MTSLs. So 70 pip का execution देखा. Swing trade में currently we are running with 700 pips short का. आवाज नहीं आ रही है. Good morning, Shreyas. बट कल के दिन थोड़ा 150 पिप्स का रेंज में ही था. तो फर्स्ट ट्रेड 150, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 70 पिप्स एंड एक नेगेटिव जो 30 पिप्स में क्लोज हुआ था, एंड देन फॉलोड थ्रू में 200 पिप्स का S2B1 एग्जीक्यूशन. सेटअप के साथ लॉन्ग जा रहा हूँ, जाओ. उड़ाने के बाद मत बोलना उड़ा दिया सर. सेकेंड ट्रेड है ना, लो ना, आराम से लो. MDSL 41, सॉरी 4201 पे रखी. एक बार ट्रेलिंग सिखा दो ना. एग्जीक्यूशन पे तो आ जाओ पहला, एनालिसिस के साथ ट्रेलिंग सिखा दो ना. प्रोस्पेक्ट एनालिसिस में आ जाओ ना. So you'll be having a really good form of executions. अंबिका, रीडेवलपमेंटल स्ट्रक्चर में डेवलप करो एनालिसिस को. BTC निफ्टी अभी भी बेरिश ही है यार. सेम फॉर्मेशन पे ही रहो फैजा. जब तक सेटअप फॉर्म नहीं होती है, विल नॉट बी लुकिंग फॉर अदर एग्जीक्यूशंस एट द करंट सिनेरियो. चलने दो, सरप्लस में है.
100% प्लान ऑफ एक्शन, 150 से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, फॉलोड थ्रू के साथ बने रहो फैजल, डोंट गो अगेंस्ट इट. माय बैड. अगर ये सस्टेन होता है तभी या 150 पे, सॉरी 150%. रिटेलर्स को एक बार तो हंट करना है यहाँ पे. हमारी भाषा में लिक्विडिटी लेने दो, प्राइस ऑफ एक्शन डेवलप होने के लिए. सर एलजी पॉइंट लेने के बाद लॉन्ग में देख सकते हो. प्रकाश, वी डोंट गिव ट्रेड्स. सेटअप है, S2B1 3 विंग सेटअप क्रिएट होता है, मार्केट इंडिकेट करती है लो. When you execute by yourself, that's when you will learn. अगर ये 5 मिनट में यहाँ पे कहीं पे क्लोज होती है एंड सेटअप फॉर्म होती है, देन जो छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हो ना, उनके लिए एक ट्रेड ऑफ एक्शन एलजी पॉइंट. 30 पिप्स का है, देख लो. रिफॉर्मेशनल ड्रॉप आने दो पैसा. फ्यूचर्स में यहाँ पे ले फॉर्म करो, ले फॉर्म करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अलॉट करो सेलिंग का. या स्ट्रक्चरल इनबाउंड बिल्ड होने दो पहला, उसके बाद ही. एनी डाउट्स प्लीज डू आस्क गाइस. सर मार्केट सस्टेन हुआ है या नहीं कैसे कंफर्म करें? 1 hour will give you the confirmation. ब्यूटीफुल. 3 मिनट में एक क्लोजर चाहिए, उसके बाद फॉलो थ्रू में प्लान ऑफ एक्शन. नो एग्जीक्यूशंस प्रायर टू दैट.
Beautiful, guys. इनबाउंड प्लान ऑफ एक्शन पे डेवलप होने दो पहला, उसके साथ. In 18 seconds, market is going to create a new candle. हंटिंग सीजन ऑन हो गया. कुछ भी. इतना छोटा छोटा मुंह में हंटिंग सीजन ऑन हो गया तो हो गया. हंटिंग सीजन तो Q2 में होगा. Can we consider in 15 minutes streaming for BTC? No, not interested. 1 आवर के फॉर्मेशन के हिसाब से देखो, 15 मिनट का फॉर्मेशन से हिसाब से देखोगे, you will definitely elide a moment where you will not be able to hold a proper directional trade. Henceforth, 1 hour screening is very much important to understand the tide of a movement to execute in a right direction. ठीक है. How many trades today? Gold, 0. BTC, 0. Indian markets currently is on break. We are hiring the analyst for that. Once we get an analyst, we will get it started.
Any doubts, please ask. Stream will be there for next 20 minutes. सर S2B1 सेटअप का फुल फॉर्म क्या है? S2B1. Strategically, you're right. Syllabusically, you're wrong. And the syllabus चाहिए ही नहीं है. Henceforth, I am happy. Rejoy movement पे रो ना. सेटअप बिल्ड होगा, एग्जीक्यूट करो. नहीं बिल्ड होगा, वेट करो. बिल्ड होते ही एग्जीक्यूट कर लो. सिंपल. Intact completed. Development formed. Very good afternoon, Peter. How are you doing? Sir, S1B1 only sell and S2B2 only buy. में ही देखना है क्या? S1 formation is looked only in perspective of Q1 and Q2. S2 formation is looked only in a lifetime process.
So S1B1, S1B2, S1B3 is looked in Q1 and Q2. And S2B1, S2B2 can be looked in perspective of any formational allocations which is in any given quarter. होप जितने भी लोग ट्रेड छोटे छोटे करते हैं उनको एक ट्रेड मिल गई यहाँ पे. रिवाइंड करके देख लो एनालिसिस को. एंड रीमैप कैसे करोगे? सिंपल. फॉर्मेशन 1, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिमांड, allotted with the prototypical moment, the drop. वरुण MTSL के साथ रहना. छोटा ट्रेड है. How did you know that the moment is going to come down? Because market said it will come down. No, I am not interested. I want a big movement here. छोटे छोटे movement में कुछ नहीं आना. Follow the analysis. You will get beautiful moves. आईडी में नहीं है, स्विंग में है BTC का मेरा. कहाँ पे एंट्री हुई है? मल्टीपल प्लेसेस. 123, 744, 121, 961, 115, 228, 113, 544, 113, 643, 110, 574, 107,009, 104,929, 109,236, 92, 155. सबका MTSL कहाँ पे है? इसमें range of motion. Beautiful, guys.
रिवाइंड करके देख लेना, रीजन ऑफ एग्जीक्यूशन क्या था। नेक्स्ट प्लान क्या है? एशियन सेशन का वॉल्यूम का प्लान है नेक्स्ट। सिंपल एंड इजी। Shakalaka bum bum. 150%. ये सस्टेन होने के बाद ही 150 है। MTSL सभी लोग जो भी ट्रेड में है 91 पे ला लो। सस्टेन होना चाहिए, सस्टेन नहीं होता है तो 100% टेक होम, डिमांड 100%। Followed through, next target is 150 and 200%. The major diluted liquidity zone. Where is your entry? 94.910. Sixty pips. First trade should be always more than 100 यार, तब मजा आएगा।
Stream will be there for next 10 minutes. जो भी doubts है, please do ask. कभी मिस आउट हुआ है, डोंट पैनिक. और एक ट्रेड मिलेगा, 5 ट्रेड मिलता है दिन में, सो चिल आउट. रेंज ऑफ मोशन क्या होना चाहिए, सेशन में समझा दूंगा. पैसा गेट रेडी फॉर न्यू प्लॉटिंग. जो मैप किया ना, सेम रेंज में. अंबिका स्टार्ट विद एमटीएस. सर M1 फॉर्म नहीं, सुरेश जी अभी तक नहीं हुआ है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, डिमांड 100% ब्रेक, 150 200 टारगेट ना. If you're taking second serving plotting, then M1 has formed. But first serving is only not yet completed, no? Henceforth. और 3 पिप दे दे यार, मजा आ जाएगा. 3 pips more. So first trade will be 100 pips. Beautiful. 150 target complete. One more draw. Lovely. 38 seconds. Followed with 5 minutes. Completed.
One more point, 100 pips. First trade, boom. वरुण के language में. Beautiful guys, TP1 hit. Thank you, Smita ma'am. One hour candle closing in 3 minutes. I don't have a problem at all. People thoughts, people way of looking into it. उन लोगों को ट्रेंड लाइन चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, जाने दो ना. Good morning, Chinmay.
एक्सपेक्टेशन सिर्फ 40 पिप्स का था, बट मजा आ गया। ग्रिड पहले ही दिखा देंगे तो मजा कहाँ से आएगा। आप ही बोलिए। न्यू कैंडल फॉर्मेशन। नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड ना। सेटअप फॉर्म होने दो, रुको। इमीडिएटली लॉन्ग चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट एड ऑन 90 से देखेंगे, नॉट प्रायोरिटी लो। 50 पिप्स ऊपर है। डेवलपमेंटल फॉर्मेशन आने दो, देन all beginners who are watching our stream, whichever strategy, whichever formulations you guys are following, 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis, come with a smaller capital, build the capital with following a proper risk to reward, with following a proper risk to reward, control on your fear, greed, and FOMO so that you can sustain in these markets. You're getting your hard-earned money into the markets. Don't give it to any random people to execute, nor follow the tips. Learn and then earn. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली स्ट्रीम में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।